potential well. Potential well, okay. Potential well with a finite height, okay. Potential well with a finite height. Potential well with finite height. See here. Potential well with a finite height. This word is important. Well means हम इन मराठी बोल सकते कि विहीर. Yes or no? Well, potential well. Okay. Potential well. Potential well. Okay. Finite potential well. Finite potential well. Finite potential well. Okay. Finite potential well. Okay. See here. Finite potential well. Finite potential well. See here. What is the nature of potential? V of x is equal to, देखिए, finite potential of nature 0. Okay, 0 in which region? Is minus a by 2 is less than x is less than plus a by 2. समझ में आ रहा है? Minus a by 2 is less than x is less than plus a by 2. And potential is like a V naught in which regions? V in minus infinity is less than x is less than minus a by 2. Okay. And second one, 0 is, plus a by 2 is less than x is less than a by, plus infinity. Plus infinity. Okay. Now this one is a potential nature. Okay. और सिंपली बोल सकते हैं कि V naught is other than, okay, or oblique otherwise, or oblique otherwise, otherwise, okay. Now तो हम ड्रॉ करेंगे तो we getting is like that. See here, this is like that, huh? This will be potential. Here potential is equal to how much? 0. In which region? Minus a by 2 is here is a 0, here is a plus a by 2. समझ में आ रहा है? Plus a by 2. Now here energy is taken as energy, yes, is taken as energy is taken as, कैसे लेना है हमें? तो 0 is less than E is less than like a V naught. Energy is taken as 0 is less than E is less than V naught. Oh, okay. तो energy जो है तो this is less than greater than, this one is a less than potential. Yes or no? Less than potential तो हमें पता होता है कि what is the nature of wave function? Nature of wave function is not a sinusoidal. This is a exponentially decrease or increase. Exponentially decrease or increase. तो आप देखिए energy is taken as 0 is less than E is less than. Now this is the first region. This is the second region. This will be third region. समझ में आ रहा है? First region, second region, third region. What is the height of this one? This height is V naught. और V लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं. V naught is a V.
here height is v naught. ओके, और कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 0 इज लेस देन ई इज लेस देन वी नॉट। तो हमारे पास पोटेंशियल इस रीजन में क्या है, तो 0 है। तो नेचर कैसे रहेगा, देखिए वेव का नेचर हियर function is exponentially increasing. Okay, here nature become like sinusoidal. Okay, and here decreasing. तो कैसे देखिए, here function is increasing up to minus infinity to a by 2, minus a by 2 to plus a by 2. Nature is sinusoidal. Why nature is a sinusoidal? Because here potential is equal to 0. And third one, here बाद में क्या हो जाएगा, देखिए यह उनकी एनर्जी ज्यादा मान के चलो, हियर नेचर विल बी इंक्रीजिंग, हियर साइनोसाइडल, हियर व्हाट हैपन, हियर दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो हमारे पास 3 वेव फंक्शंस आ जाएंगे। बोलिए कि हियर हमें पता है कि हियर पोटेंशियल इज ग्रेटर देन नंबर 1 और फर्स्ट रीजन, नंबर 1 और केस 1 बोल सकते हैं हम, केस फर्स्ट इन फर्स्ट रीजन, in first region। देखिए which one is the first region, this one is the first region where minus infinity to minus a by 2, minus infinity to minus a by 2। तो देखिए इस रीजन में हमारा पोटेंशियल और एनर्जी का रिलेशन क्या है, तो E is less than V naught। आ रहा है समझ में, E is less than V naught। तो find out this wave function। We know that EHSI is Schrodinger equation as C. HSI is equal to E psi. Okay, what is the H? H is minus H cross square upon 2m dabba square upon dabba x square psi plus V naught psi is equal to E psi। आ रहा है समझ में? Why we can take a E and V naught here? Because they are given this potential। Clear? Then this is equal to how much then? H cross square, or we can write on the dabba square psi upon dabba x square plus 2m upon h cross square e minus v bracket complete psi is equal to how much? 0। समझ में आ रहा है? 2m upon h cross square e minus v bracket complete psi is equal to 0। लेकिन in this case which quantity is larger? Here v is greater than e और v naught is greater than e। समझ में आ रहा है? तो ये जो डिफरेंस है, दिस गेटिंग नेगेटिव, then whatever the we can getting this constant is equal to negative। Okay, negative square is nothing but I square। Okay, and I square means we're getting the roots is imaginary। Okay, means your answer is getting in the form of imaginary, and this one is not allowed now। Okay, then how to taken as this part as a positive one। पॉजिटिव कैसे ले सकते, तो इंटरचेंज द साइन, मतलब माइनस वी कैन टेक कॉमन आउट, dabba square psi upon dabba x square minus 2m upon h cross square। इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? बिकॉज ये जो डिफरेंस है वो नेगेटिव ही आएगा, बिकॉज पोटेंशियल इज ग्रेटर देन एनर्जी, ये क्वांटिटी ज्यादा है इससे, वी गेटिंग डिफरेंस इज अ नेगेटिव। ओके, तो इसलिए वी कैन इंटरचेंज द साइन और माइनस वी कैन टेक आउटसाइड, देन दिस बिकम 2m v naught minus e bracket complete psi is equal to how much? 0। अरे समझ में? सपोज मान के चलिए कि गामा स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ये क्वांटिटी ले लेता हूं, 2m upon h cross square v naught minus e। Okay, means what is the value of gamma? Gamma is equal to under root 2m upon h cross square v naught minus e। Alright, समझ में? Means what is the value of gamma? Gamma value is equal to 2m upon h cross square v naught minus e। Okay, then we can write down this wave function dabba square psi upon dabba x square minus gamma square psi is equal to 0। Okay, we know that dabba upon dabba x is nothing but d, dabba upon dabba x is nothing but d। So this can be written as, yes, d square psi minus gamma square psi is equal to 0। Then d square minus gamma square bracket complete psi is equal to 0। But we know that psi is not equal to 0। Psi is not equal to 0 means implies that first part is equal to 0, means d square minus gamma square is equal to 0। Then d square is equal to how much? D square is equal to gamma square।
Don't getting the minus, huh? We're getting the minus, we can write down the I square, but here is not a minus. Then simply D is equal to solution is plus or minus gamma. Plus or minus gamma. Here we're getting the plus or minus without I. Without I means this one is not a sinusoidal. This one is not a sinusoidal. Now this is a exponential. Means what is the solutions? Solution is equal to e to the power gamma x plus b e to the power minus gamma x. आ रहा है समझ में? Because here we're getting the plus or minus gamma. Here we're getting the plus or minus I gamma. Then we can write down the solution is a e to the power I gamma x plus b e to the power minus I gamma x. समझ में आ रहा है? But this one is a exponential function because I is not surviving in these solutions. Clear? Means I is equal to how much? This one. Now, we know that we're getting this wave function for which region? Minus infinity is less than x is less than minus a by 2. This region wave function. In this region, yes, in this region, okay. In this region, what is the wave function? In this region, wave function psi is equal to, yes, psi is equal to a e to the power gamma x plus b e to the power minus gamma x. Okay. Now boundary condition उसमें substitute करिए is in this case which one is boundary? Minus a by 2 is boundary, minus infinity is boundary. Okay. Suppose at x is equal to minus infinity. At x is equal to minus infinity, here is the two parts. Which one? A e to the power gamma x and the second one is b e to the power minus gamma x. समझ में? We can substitute here. X is replaced by minus infinity, then this become a e to the power minus gamma infinity. Minus gamma infinity. My gamma into infinity is nothing but infinity, means a e to the power minus infinity. But we know that e to the power minus infinity is equal to 0 and e to the power plus infinity is equal to how much? Infinity. मतलब हम कौन से फंक्शन को वेल बिहेव्ड कहते हैं? जो फंक्शन at x is equal to 0, at x is equal to minus infinity, at x is equal to plus infinity, वेल बिहेव होना चाहिए, मतलब फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए. ये सब. लेकिन देखिए यहाँ जो वैल्यू है ना, e to the power minus infinity कितना है? 0 है. मतलब 0 into a is equal to how much? 0. Means that this part is well behaved. Q well behaved. We can substitute the x is equal to minus infinity. Then we're getting answer is equal to how much? 0. Clear? Means first part is well behaved. Focus on second. Then second region B e to the power minus gamma into minus infinity. Means a to the power minus become plus infinity. और e to the power plus infinity क्या होता है? तो plus infinity. मैं समझ में आ रहा है? At infinity, this b e to the power minus gamma x is not a well behaved wave function. समझ में आ रहा है? अब बोलेंगे माइनस इंफिनिटी पुट कर दिया अभी हमने, प्लस इंफिनिटी क्यों नहीं पुट कर रहे? ये सही बात है, लेकिन ये जो रीजन है ना, वो रीजन कौन सा है हमारा? माइनस इंफिनिटी टू a by 2. इसलिए हमारे अलाउड वैल्यू कौन से रहेंगे? माइनस इंफिनिटी टू माइनस a by 2. डोंट सब्स्टिट्यूट द हियर प्लस a by 2. क्लियर? इसलिए वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द x इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी. आ रहा है समझ में? वी कैन सब्स्टिट्यूट द x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, व्हिच फंक्शन इज allowed one, well behaved. तो फर्स्ट पास a e to the power gamma x, और सेकंड वाला पार्ट नहीं सर्वाइव हो जाएगा क्योंकि we getting this one is not a well behaved, means we getting this answer is infinity. Means what is the wave function for first region a e to the power gamma x. समझ में आ रहा है? a e to the power gamma x. This is the wave function for first region. Yes or no? This is the wave function for first region. Now और सिंपल सी बात है, in first region wave function is, which wave function is well behaved? A e to the power gamma x is well behaved. Yes or no? No. देखिए
In this range, means which range? Minus infinity to minus a by 2, the wave function must be vanish at x is equal to minus infinity. Okay, in this range. In this range, means which range? In this range. In this range. In this range, minus infinity is less than x is less than plus minus a by 2. In this range, the wave function, okay, must be vanished, at x is equal to minus infinity. X is equal to how much? Minus infinity. Then उसको बोल सकते हैं हम phi 1 is a vanished, okay, or psi 1 is vanished, or this is equal to how much? 0. Okay. Means implies which part is equal to 0? B is equal to getting 0. B is equal to 0 means what is the wave function? B is equal to 0 means psi is equal to simply a e to the power gamma x. समझ में आ रहा है? Means this one is not, second part is well behaved. Second part is not well behaved. Then we getting solution is y is equal, psi is equal to a e to the power gamma x. तो nature कैसे रहेगा देखिए. This one is a minus infinity. This is minus a by 2. So this region, this one is finite potential. So up to here, this nature is like that. This nature is, ये प्लस इंडिकेट क्या कर रहा है? तो मान के चलिए x increases, x कौन से डायरेक्शन से इंक्रीज हो जाएगा? x increase along the direction, then this value become increase. Yes or no? Like that, e to the power 1, e to the power 2, e to the power 3, this value will be increasing. Yes or no? Because here value is, sign is positive, then exponential part is positive, then value will be increased, graph also increase. अरे समझ में? up to where? Up to minus a by 2. ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है? तो माइनस ए बाई माइनस इंफिनिटी टू ए बाई 2 नेचर विल बी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज. ओके, फर्स्ट पार्ट ओवर. इन दिस केस व्हाट इज द वेव फंक्शन? इन फर्स्ट रीजन वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन psi e is equal to, और psi 1 is equal to how much? a e to the power gamma x. समझ में आ रहा है? e to the power gamma x. Now focus on second one. For second region, yes, for second region, yes, second region में नेचर क्या है? देखिए, here potential is equal to second region, potential V is equal to how much? 0. Potential V is equal to how much? 0. Potential V is equal to 0. Then what is the wave function nature? What is the wave function nature? Yes, बोलिए, what is the wave function nature now? Here potential is equal to 0. Again, we can use the Schrodinger equation. What is the Schrodinger equation? HSI is equal to E psi. Okay. Then this is equal to how much? Minus h cross square upon 2m. Dava square upon dava x square. Psi is equal to E psi. Why we can directly, this is equal to E psi? Because potential is equal to 0. Now E we can take on this side. Then this become dava square psi upon dava x square plus 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट psi is equal to 0. लास्ट टाइम हमें कांस्टेंट पार्ट जो है, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिया था? वी कैन टेक द गामा स्क्वायर. नाउ हियर एनर्जी, दिस पार्ट इज अ डिफरेंट वन. एट दैट टाइम दिस पार्ट इज 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, v0 माइनस e था. अभी हमारे पास 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर है. तो जनरली इसके रिगार्डिंग हम क्या लेते? तो k लेते. समझ में आ रहा है? तो k स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर. Okay, then this part is substituted this one, then dava square psi upon dava x square plus k square psi is equal to 0. Dava upon dava x d, then d square plus k square is equal to, or bracket complete psi is equal to 0. समझ में आ रहा है?
Again, ab is equal to 0 means a is equal to 0, b is equal to 0, but psi is not equal to 0. Psi हम 0 नहीं ले सकते. Psi is not equal to 0 implies that d square plus k square is equal to 0. Means what is the solution? D is equal to plus or minus ik. Solution में आया आ रहा ना, solution में आया आ रहा ना, तो इसका मतलब this will be sinusoidal wave function. आ रहा समझ में? मतलब this is a sinusoidal wave function. Means what is the solution for this case? We can take two solutions. Psi is equal to a e to the power ikx plus, sorry, already a we can take in this, c e to the power ikx plus d e to the power minus ikx. ओके, और सेकेंड वन हम इस फॉर्म में ले सकते हैं या कॉस के फॉर्म में ले सकते हैं. सी इट कॉस सी साइन के एक्स प्लस डी कॉस के एक्स. समझ में आ रहा है? साइन सी के एक्स और डी कॉस के एक्स, मतलब ई टू द पावर आई एक्स में भी लिख सकते हैं, या ये कैसे आता है समझ में आ रहा है आपको कि लाइक दैट मान के चलो ई टू द पावर आई एक्स कैन बी रिटन एज cos x plus I sin x. Similarly, this also we can write on this one. We're getting sin and cos format. Sin and cos format. Alright, समझ में? Is what is the solution for this case? This solution can be written as. और लग रहा है आपको नहीं, मुझे डायरेक्ट नहीं लिखना है, तो डोंट वरी अबाउट दिस वन. आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको? देखिए, साई इज इक्वल टू हाउ मच? दिस वन. तो हमारे पास दो वेव फंक्शंस आ जाएंगे. ये सुनो, दिस इज द पॉसिबिलिटीज, दिस में भी इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन. सपोज मान के चलिए कि दिस इज अ सेकंड ना, साई सेकंड, दिस वन इज अ इवन फंक्शन. इवन फंक्शन मान के चलिए कि दिस इज अ इवन फंक्शन है. तो इवन फंक्शन अभी तो आपको आइडिया नहीं आ रहा है कि दिस इज अ इवन और ऑड. ओके, हम जब लिखते हैं ना कॉस एंड साइन, इसका मतलब दोनों भी हो गए इवन और. तो साई इज इवन फंक्शन है हमने बोल दिया मान के चलिए. तो व्हाट इज द कंडीशन? साई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ प्लस एक्स आ जाएगा. समझ में आ रहा है? एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, देन वी कैन से एफ ऑफ थीटा इज अ even function, and f of minus theta is equal to getting minus f of theta, then we can say this is a odd function. आ रहा है समझ में? ना देखिए, even के लिए कंडीशंस क्या है? psi of minus x is equal to psi of plus x, psi of plus x. now सब्स्टिट्यूट करिए इसमें psi second, yes, c e to the power I k, but x is replaced by minus x, okay, plus d e to the power minus ik into minus x, okay, and is equal to how much? Suppose is equal to, yes, psi second positive x means c e to the power ikx plus d e to the power minus ikx. ओके, समझ में आ रहा है कंडीशन? दिस इज इवन कंडीशन. एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा इवन फंक्शन. क्लियर? तो दिस बिकम्स सी ई टू द पावर माइनस आई के एक्स प्लस डी ई टू द पावर आई के एक्स इज इक्वल टू सी ई टू द पावर आई के एक्स प्लस डी ई टू द पावर माइनस आई के एक्स. कंपेयर करिए, हमने इक्वेशंस कंपेयर कर दे तो वी गेटिंग, देखिए, this is equal to, comparing this one, c e to the power minus ikx is equal to d e to the power minus ikx. कंपेयर करिए, माइनस के लिए माइनस, प्लस के लिए प्लस, then c e to the power minus ikx is equal to getting d e to the power minus ikx, implies that c is equal to how much? d. or similarly we can write on d e to the power ikx is equal to c e to the power ikx. Comparing this one implies that we're getting the d is equal to how much? c. Alright, समझ में? मतलब these two, both the constant will be same. And what is the value of psi second? Psi second is equal to c e to the power ikx plus d is nothing but c, then c e to the power minus ikx. समझ में आ रहा है? e to the power i theta plus e to the power minus i theta is nothing but cos theta होता है, तो हम ऐसे लिख दे तो चलेगा. We can take c is common out,
and here we can divide by 2 and multiply it by 2, then this become e to the power I theta plus e to the power minus I theta upon 2. समझ में आ रहा है? मतलब 2c e to the power I theta plus e to the power minus I theta upon 2 means 2c into this one. Suppose we consider the c star or capital C is equal to suppose 2 small c. आ रहा है समझ में? ऐसी कुछ बात है नहीं कि we can take another constant also means इसके लिए आप ये बोल सकते हैं w बोल सकते हैं as you wish, ऐसी कुछ बात ही नहीं है because this 2 into c is constant. 2 constant, c तो already constant है, constant into constant become constant as you wish. लेकिन हमारे पास c और d के फॉर्म में लेना है इसलिए we can write down the c only, no problem. Okay, then 2c is nothing but c, then c e to the power I theta plus e to the power minus I 2 theta is nothing but cos theta. What is the value of theta here? Theta is nothing but kx. Theta is nothing but kx. Means, so what is the even function? Even function. Yes, even function in the second region is equal to how much? C cos kx. C cos kx. समझ में आ रहा है? Similarly मुझे odd कर लेना है कि मान के चलिए कि this function is odd. तो odd function, suppose odd function, this is odd function, suppose odd function. देखिए odd function में कंडीशन क्या होती है? f of minus x is equal to minus f of x. मतलब साइज सेकंड minus x is equal to minus f of, सॉरी ये अपने तो अभी साइज सेकंड x, अरे समझ में? साइज ऑफ minus x is equal to minus f of x. तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस रिगार्डिंग वैल्यूज. हाँ बोलिए, तो कैसे लिखेंगे फिर इसको हम? साइज सेकंड ऑफ माइनस एक्स. व्हाट इज द साइज सेकंड? साइज सेकंड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? सी ई टू द पावर आई के एक्स प्लस डी ई टू द पावर माइनस आई के एक्स. ओके, तो साइज सेकंड एक्स इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स लिखिए. तो सी ई टू द पावर माइनस आई के एक्स प्लस डी ई टू द पावर प्लस आई के एक्स, बिकॉज माइनस माइनस बनेगा प्लस, इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स. मतलब c e to the power I k x प्लस d e to the power माइनस I k x. तो देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए तो दिस बिकम c e to the power I k x प्लस d e to the power माइनस I k x प्लस I k x इज इक्वल टू माइनस c e to the power I k x माइनस d e to the power माइनस I k x. कंपेयरिंग दिस वन, कंपेयर कर सकते हैं हम. कंपेयरिंग, देन वी गेटिंग c e to the power minus I k x is equal to minus d e to the power minus I k x. Minus I k x plus minus I k x get cancel. मतलब c is equal to how much? Minus d. और d is equal to how much? d is equal to minus c. Okay, d is equal to minus c. Then what is the solution in second? C e to the power I k x minus c e to the power minus I k x. समझ में आ रहा है? Now this is nothing but c we can take outside, inside e to the power I k x minus e to the power minus I k x. तो आप देखिए इसमें इस टर्म के लिए हम cos लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं. तो सिंपल सी बात है, e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर आई थीटा, ये साइन में होता है या cos में होता है? तो सिंपल आप बोलेंगे कि साइन में होता है, ये सर नो. लेकिन साइन में होने की वजह से हमें और एक एक्स्ट्रा पार्ट होना जरूरी है. विच वन? हियर डिवाइडेड बाय 2i होना चाहिए, ये सर नो. तो हियर 2i इज नॉट प्रेजेंट. 2i is not present, don't worry about this one, just adjust this one. Then psi second is equal to, बोलिए, here we can divide by 2i, multiply by 2i, means that 2i c e to the power I k x minus e to the power minus I k x upon 2i. जैसे हमने लास्ट केस में लिया था c is equal to 2c, मतलब constant c is equal to 2 times of constant. Similarly here also don't worry about the imaginary part, इसको भी हम कांस्टेंट में लेंगे. मान के चले कि दिस c is equal to how much? दिस c is equal to 2ic. आप बोलेंगे लास्ट c को 2c आ रहा था, यह
2i से आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए अलग भी नोटेशन हम यूज कर सकते हैं. मींस व्हाट इज द साई सेकंड? साई सेकंड इज इक्वल टू c into e to the power I theta minus e to the power minus I theta is nothing but sin kx. समझ में आ रहा है? दिस इज द ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन साइन आ रहा है तो सिंपल आपको भी समझ में आ रहा है कि दिस विल बी ऑड फंक्शन. Suppose in second region function is odd, then psi of x, psi of second is equal to c sin kx. Function is even, function even cos. Psi is equal to how much? Cos kx. Psi is equal to cos kx. Odd के लिए this one. मतलब हमारे जो second region है ना, region second, in second region, we're getting how many wave function? Two wave function. First is suppose even function. Even function means psi second is equal to suppose a cos kx, and odd function, yes, odd function psi second is equal to a sin kx. आ रहा है समझ में? इवन के लिए cos, odd के लिए sin. In which region? Second region. सबसे important बात है. Okay, now again focus on third region. Which one is third region? This one is third region. Yes, here is plus a by 2 to infinity. In this region, what is the wave nature? तो देखिए third region में क्या हो सकता है? What is the potential here? Here again we know that potential is greater than, this is the height V naught. Okay, here V naught is greater than E. V naught is greater than E. Again we can use the Schrödinger equation, और हमें पता होता है कि 0 is less than taken as energy is less than V naught. Okay, using the Schrödinger equation, yes. What is the Schrödinger equation? HSI is equal to E psi. Okay, H minus double square upon double x square psi plus 2m upon h cross square plus sign लीजिए 2m upon h cross square v naught minus sorry e minus v naught ब्रैकेट कंप्लीट साई इज इक्वल टू 0. ओके, रेगुलर आ जाएगा वो. लेकिन सेकंड बात याद रखिए कि हियर v naught इज ग्रेटर देन e, और वैसे ही पुट करके आप जब उसको वैल्यू लेंगे तो दिस वैल्यू गेटिंग इमेजिनरी, इसलिए पहले ही उसको पॉजिटिव करिए. तो पॉजिटिव हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन टेक द आउटसाइड इज माइनस, देन डबल स्क्वायर साई अपॉन डबल एक्स स्क्वायर माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर v नॉट माइनस e ब्रैकेट कंप्लीट साई इज इक्वल टू 0. ओके, ऑर्डिनरी सिस्टम के लिए हमने कुछ ना कुछ लिखा है. यस, दिस इज नथिंग बट गामा स्क्वायर, and gamma square is equal to how much? 2m upon h cross square v naught minus e. आ रहा है समझ में? Means what is this one? Double square psi upon double x square minus gamma square psi is equal to 0. और हमें पता होता है. What is the solution for this one? Yes, solution d square minus gamma square is equal to 0. मतलब d square is equal to gamma square. Means what is the solution? Is a plus or minus gamma. आपको अभी समझ में आया होगा कि here is not I is surviving here. Here I is not surviving means solution is a sinusoidal. Solution is a sinusoidal means like that c e to the power gamma x plus d e to the power minus gamma x. अरे समझ में? अब यहाँ f भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है. Suppose f e to the power gamma x e, okay, and this can be written as f e to the power माइनस गामा एक्स. कोएफिशिएंट जो है आप पे डिपेंड करेगा, कोई भी यूज कर सकते हैं. अरे समझ में? साई इज इक्वल टू e टू द पावर गामा एक्स प्लस f e टू द पावर माइनस गामा एक्स. ये कौन से रीजन में प्रेजेंट है? तो देखिए हियर रीजन इज प्लस a by 2 is like that less than x is less than plus infinity. ये फंक्शन जो है ना हमें वेल बिहेव्ड होना चाहिए. अब देखिए इसमें इंफिनिटी वैल्यू पुट करिए, a by 2 पुट करेंगे तो दोनों वेल बिहेव्ड हो जाएंगे, लेकिन ऑल रीजन में वेल बिहेव्ड होना चाहिए. तो e टू द पावर x इज रिप्लेस बाय इंफिनिटी, मतलब गामा इनटू इंफिनिटी. गामा इनटू इंफिनिटी मींस इंफिनिटी. e टू द पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू हाउ मच? Is equal to infinity, because we know that e to the power infinity is plus infinity.
Infinity to something, infinity implies that E is equal to 0. अरे समझ में मतलब in region which wave function is vanish, e to the power gamma x is vanish. Second check करिए e to the power f e to the power minus gamma x. X is replaced by plus infinity, then a of e to the power minus into gamma infinity. Now this is equal to how much? E of e to the power infinity into something, infinity minus infinity, और e to the power minus infinity कितना होता है? 0. Okay, means second solution is allowed for this case. Okay, means what is the third proper solution or well behaved wave function? F e to the power minus gamma x. F e to the power minus gamma x. समझ में आ रहा है? What is the nature here? Gamma x. This is exponential. Increasing, decreasing, minus indicate that decreasing. It means nature is like that. E to the power minus gamma x. समझ में आ रहा है तीनों में रीजन में? First region exponentially increase. We can substitute the minus infinity. Minus minus become plus and positive will be surviving. Here x is equal to plus infinity. Plus infinity is a infinity. इसलिए exponentially increasing part is a vanish. Okay, means only which part will be survive? Exponentially decreasing. Means what is the well behaved wave function? F e to the power minus gamma x. ये दोनों भी समझ में आ रहा है? समझ में? तो यहाँ इंफिनिटी पुट करिए, जो भी फंक्शन 0 आ रहा है या फाइनाइट आ रहा है तो दिस विल बी अलाउड वन. ये इंफिनिटी आंसर दे रहा है तो दिस वन इज नॉट वेल बिहेव्ड, दिस फंक्शन इज वैनिश. ओके, हमने तीनों भी रीजन में फाइंड आउट कर दिया है. देखिए बोलिए फर्स्ट रीजन व्हाट इज द वेव फंक्शन फॉर फर्स्ट रीजन? यस, फर्स्ट रीजन minus a by 2 is less than x is less than plus a by 2. Okay, and what is this one? This is minus infinity to a by 2. Here wave function in first region, a e to the power gamma x, positive will be surviving, and here psi is equal to we're getting a cos kx, a sin kx. This is for even case, this is for odd case. Okay, we're getting the two solutions, even and odd. And what is this third region? Psi third is equal to a e to the power or a of e to the power minus gamma x. अरे समझ में? तो नेचर कैसे आएगा देखिए, like that. This is we can write on this one. इसको ऊपर मत लेके जाइए ज्यादा, और जो भी एम्पलीट्यूड इसके हिसाब से. This is e to the power minus gamma x, here e to the power gamma x, and here is sin and cos. Clear? As what is the first region? Region number 1. Region first, psi 1 is equal to solution, allowed solution, e to the power gamma x, e to the power gamma x. Region second, in region second, first region, second region, psi second is equal to a, कुछ भी नोटेशन लीजिए, डोंट वरी अबाउट दिस वन, c e to the power c cos kx, next c sin kx, for even, for odd. Okay, and what is the region third solution? Region third, yes, region third, psi 3 is equal to f e to the power minus gamma x, e to the power minus gamma x. Okay, yes, up to here any doubts? Now देखिए psi 1, psi 2, psi 3. Here function is continuous, discontinuous, continuous at a boundary. Okay, continuous at a boundary. At x is equal to how much? At x is equal to
minus a by 2, suppose at x is equal to minus a by 2, which function is continuous? Here region, this is a psi1 function, this is psi2 function. Okay, yes or no? Suppose हम e1 और के हिसाब से ले सकते हैं, yes or no? तो पहले मुझे लेना है e1. ओके, तो e1 ले लिया फॉर सिमेट्रिक केस, yes or no? फॉर सिमेट्रिक केस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. फॉर असिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, for symmetric wave function, for symmetric wave function at x is equal to minus a by 2. At x is equal to minus a by 2 means this boundary minus a by 2. Here which function is there? Here is a psi first, here is like a psi second. Okay, these two wave function are continuous at a boundary, continuous at a boundary. Okay, x is equal to like minus a by 2. साई सेकंड में कौन सा पार्ट लेंगे हम? बस सिमेट्रिक वाला, साई सेकंड सिमेट्रिक. ओके, साई 1 at x is equal to how much? फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन at x is equal to minus a by 2, like psi 1 is equal to psi 2. समझ में आ रहा है? psi 1 is equal to psi 2 at which value? Like at x is equal to minus a by 2, at x is equal to minus a by 2. समझ में आ रहा है? तो सब्स्टिट्यूट करिए. What is the psi first? Psi first is equal to, देखिए, a e to the power gamma x, a e to the power gamma x, a e to the power gamma x is equal to, again we consider the constant is a, then this is equal to how much? E1 function. E1 function is cos kx, at which value of x? X is equal to minus a by 2. At x is equal to minus a by 2. समझ में आ रहा है? At x is equal to minus a by 2. आपको लग रहा है कि कांस्टेंट मुझे अलग आ रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं. व्हाट इज द कांस्टेंट फॉर हियर? a. व्हाट इज द कांस्टेंट फॉर हियर? Here constant is c, so write down c here, no problem. This is the first boundary condition. What is the second boundary condition? Second boundary condition, dava psi 1 upon dava x is continuous at x is equal to minus a by 2. या पुट करिए पहले वैल्यूज. yes, then this is equal to how much? a e to the power minus gamma a by 2. x is replaced by a by 2. Then this is equal to how much? c cos k a by 2, because minus cos theta is nothing but cos theta. क्लियर आ रहा है समझ में? सपोज मान के चलो कि दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1. देन व्हाट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड? व्हाट इज द सेकंड बाउंड्री कंडीशन? सेकंड बाउंड्री कंडीशन. व्हाट इज द सेकंड बाउंड्री कंडीशंस? at x is equal to yes minus a by 2, psi 1 prime is equal to psi 2 prime. Yes or no? At x is equal to minus a by 2, at x is equal to minus a by 2. समझ में आ रहा है? मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस. देन dava psi first upon dava x at x is equal to minus a by 2 is equal to how much? Dava psi second upon dava x at x is equal to minus a by 2. Okay, what is the first derivative? A e to the power gamma x, a e to the power gamma x, derivative is equal to how much? Gamma a e to the power gamma x. Okay, and what is the second derivative? C cos kx derivative is how much? C k cos derivative is minus sin kx. आ रहा है समझ में? C minus sin kx. अब अभी हमारे पास दोनों भी वैल्यू आ रहे हैं, तो सेकंड जो है तो उसको हम सेकंड कहेंगे. आ रहा है समझ में? सेकंड को हम क्या कंसीडर करेंगे? सेकंड वन. देखिए, दिस इज माइनस सी की. व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव? फर्स्ट डेरिवेटिव इज गामा a e to the power gamma x at x is equal to how much? Minus a by 2. And what is the second derivative? Second derivative is minus k c sin kx
एट एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, कहा कंटिन्यूस है, एट माइनस ए बाई टू। सब्स्टिट्यूट करिए क्या, तो गामा ए ई टू द पावर प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस गामा ए अपॉन टू, ओके, इज इक्वल टू, देखिए माइनस के सी एक्स इज रिप्लेस बाय माइनस ए बाई टू, देन साइन के माइनस ए बाई टू, एंड माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाएगा, ओके। तो ए गामा ए टू द पावर माइनस गामा ए बाई टू इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के सी साइन के ए बाई टू। समझ में आ रहा है? तो मुझे, मैं बोलता हूं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। व्हाट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट? इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज इक्वल टू, यस, हाँ, a e to the power minus gamma a upon 2 c e to the power cos, okay, a e to the power minus gamma a by 2 is equal to c cos k a by 2. Equation number suppose second, okay. This one is first, not second. This is the first one. Suppose we can divide second divided by first, second divided by second, सेकंड फंक्शन को हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। ये सर क्या कर सकते हैं हम, डिवाइडेड इक्वेशन 2/1, ओके, डिवाइडेड इक्वेशन 2/1, ओके, 2/1, ओके। तो डिवाइड करिए, डिवाइडेड इक्वेशन 2/1, तो हियर दिस बिकम साइन अपॉन कॉस, एंड व्हाट इज द लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड आएगा हमारा, दिस इज द इक्वेशन 1/2, ओके, 1/, तो ए गेट कैंसिल हो जाएगा, ओके, सॉरी, 2/1 ना, इज 2 डिवाइडेड बाय 1, ओके। तो व्हाट इज द 2 गामा ए e to the power minus gamma a by 2 divided by a e to the power minus gamma a by 2 is equal to kc e to the power, sorry, sin kx sin ka by 2 divided by c cos ka by 2, okay. Which part get cancel? A get cancel, e to the power get cancel, means gamma is equal to cc get cancel k sin ka by 2, sin ka by 2, अरे समझ में? Now means equation number 2 divided by 1 is equal to how much? We getting gamma is equal to k sin upon cos ना, तो this is equal to how much? tan k by 2, tan आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, is equal to tan ka by 2। समझ में आ रहा है? k tan ka by 2। अब इस दोनों इक्वेशन को मैं लेफ्ट से कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो कुछ भी चेंज नहीं हो जाएगा, ओके, बिकॉज हमें दोनों साइड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सपोज मान के चले कि मैंने क्या कर दिया, हियर वी कैन डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय a, सिमिलरली हियर आल्सो वी कैन राइट डाउन द सपोज k by 2, मतलब a by 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, कुछ भी चेंज नहीं हो जाएगा, इनटू 10k by 2। देखिए अभी अच्छे तरफ से दिख रहा है, अरे समझ में? तो सपोज मान के चलो इसके रिगार्डिंग हम कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ कांस्टेंट लेते हैं। सपोज ईटा इज इक्वल टू गामा ए अपॉन 2 एंड जीटा इज इक्वल टू के ए बाई 2, समझ में आ रहा है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर? दिस कैन बी रिटन एज ईटा इज इक्वल टू जीटा tan जीटा, समझ में ना? ईटा इज इक्वल टू जीटा tan जीटा, ओके। अभी जो ये जो पार्ट है ना, वो कैसे दिखाई दे रहा है? देखिए, दिस इज लाइक दैट अ सर्कल, दिस इज सीइंग लाइक दैट अ सर्कल, लाइक दैट, एंड स्क्वायर। सपोज मान के चलो मैं इसका स्क्वायर कर दे दूं,
eta square plus zeta square is equal to how much? Eta square plus zeta square, ये दोनों पार्ट का मैं स्क्वायर कर दे तो this become, yes, what is the eta's values? This is gamma square a square upon how much? 4 plus what is the zeta square? K square a square upon 4. समझ में आ रहा है? एटा स्क्वायर मैंने ये दोनों का स्क्वायर कर दिया, बस एडिशन कर दी दोनों की. नेक्स्ट आर गामा स्क्वायर इज नथिंग बट हमें पता होता है व्हाट इज द गामा स्क्वायर वैल्यू इज 2m v नॉट माइनस e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर. ओके, सिमिलरली के स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए प्लस के स्क्वायर इज नथिंग बट 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर. ओके, ब्रैकेट कंप्लीट. a स्क्वायर बाय 4 मैं बाहर ले लेता हूं, समझ में आ रहा है? a स्क्वायर बाय 4 वी कैन टेक आउटसाइड. गामा की वैल्यू तो पता होती है ना, गामा इज नथिंग बट 2m v नॉट माइनस e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k इज नथिंग बट 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर. इसमें कुछ पार्ट कैंसिल हो सकता है, यस, this part get cancelled. Means here we getting 2m v naught a square upon 4h cross square. Okay, 1 to get cancelled, and this getting m v naught a square upon 2h cross square. 2h cross square. मतलब ये जो पार्ट है ना कैसे दिखाई दे रहा है, देखिए eta स्क्वायर प्लस zeta स्क्वायर इज इक्वल टू m v naught a square upon 2h cross square. दिस इज लाइक दैट. हम इसको r स्क्वायर बोल सकते हैं, यस, कोई दिक्कत नहीं. दिस इज सिंग लाइक दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज नथिंग बट z स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज नथिंग बट r स्क्वायर. मतलब ये जो पार्ट है दिस सिंग लाइक दैट अ सर्कल. अरे समझ में? दिस इज वन रेडियस, दिस वन इज अनदर, दिस इज अ टोटल थर्ड. लाइक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. क्लियर? Means what is the value of r here? r is nothing but m v naught a square upon 2h cross. इसके रिगार्डिंग आप कुछ भी नोटेशन ले सकते हैं, ऐसी कुछ बात है ही नहीं. ओके, अरे समझ में? तो व्हाट इज दिस वन? दिस इज नथिंग बट गामा अपॉन गामा a अपॉन 2 इज नथिंग बट eta, k अपॉन 2 इज नथिंग बट zeta. ओके, ये दो नोटेशन हमने यूज कर दिए. देन वी गेटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू हाउ मच? eta इज इक्वल टू गामा tan. ओके, दिस इज फॉर even or. This is for symmetric case, asymmetric case. For symmetric case, tan for symmetric one. This is for symmetry. Okay, we're getting eta square plus zeta square is equal to eta square plus zeta square is equal to, yes, m v naught a square upon 2h cross square. Okay. दिस इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट m v naught a square upon 2h cross square bracket s to square. मतलब this is nothing but r square. Means what is the value of r? r is equal to, yes, r is equal to m v naught a square upon 2h cross square. This is the radius of the system. अरे समझ में? This is the radius of the system. Next. ये जो सॉल्यूशंस, इसका जो सॉल्यूशंस है ना, हमको ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा. इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व. हमने इक्वेशन क्या आ रहा है, देखिए, eta स्क्वायर प्लस zeta स्क्वायर इज इक्वल टू m v नॉट a स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर. यस और नो? तो दिस इक्वेशन कैन be solved only by, can be solved only by graphical method for zeta. Graphical method for zeta. ओके, तो इस zeta के फॉर्म में भी देख सकते हैं इसको. n स्क्वायर इज नथिंग बट, बोलिए, n स्क्वायर इज नथिंग बट क्या वैल्यू हमारे पास? दिस इज नथिंग बट zeta स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर.
tan स्क्वायर जीटा। समझ में आ रहा है? तो इसके रिगार्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? थीटा इज इक्वल टू जीटा tan जीटा। अरे समझिए, वही तो लिखा है ना हमने। तो एन स्क्वायर की जगह, ईटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? जीटा स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू m v नॉट a स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर। ओके, नाउ v नॉट a स्क्वायर, इसमें जो ये पार्ट है ना v नॉट a स्क्वायर, v नॉट a स्क्वायर is the strength of potential. This is nothing but strength of potential, strength of potential on which, on which, on which depend on number of bound state, on which depend on, depend on number of bound state, number of bound states. Okay, number of bound state, देखिए number of bound state। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, जीटा और ईटा का रिलेशन लेंगे। देखिए, जीटा और ईटा का रिलेशन लेंगे तो ग्राफ कैसे आ सकता है? देखिए ग्राफ, along this direction we can write eta, okay, and along this direction we can write zeta, okay। now now देखिए, we can substitute theta is equal to, theta वैल्यू आ जाएगी ना, zeta is nothing but theta। क्यों? क्योंकि हमारे पास eta is equal to क्या फॉर्मूला है? zeta tan zeta मींस एंगल इज इक्वल टू हाउ मच? zeta। ओके, हम एंगल लिखते हैं इज पाई बाई 2, नेक्स्ट पाई, नेक्स्ट 3 पाई बाई 2, next 2 pi, next and so on। Okay, now we can substitute this value, theta is equal to 0 or eta is equal to 0, then what is the value of tan? What is the value of tan 0? Tan 0 is 0 because tan 0, tan theta is nothing but tan theta is equal to sin theta upon cos theta, sin theta upon cos theta।
Yes, up to here, any doubt? थोड़ा ग्राफ को थोड़े सा अच्छी तरह से देखिए. Tan theta is equal to how much? Tan theta is equal to so tan theta is equal to क्या होता है? Sin theta upon cos theta होता है. Yes or no? Sin theta upon cos theta. तो देखिए ये जो वैल्यू होती है वहां हम पुट करेंगे. Theta is equal to zero. Theta is equal to zero. Tan zero is equal to zero because sin zero zero. Zero upon something zero. So write down this is one is zero. Next, pi by two. Sin pi by two is one, but cos pi by two is zero. 1 upon 0 is infinity. मतलब here point going to the infinity. मतलब nature is like that. Graph nature. समझ में आ रहा है? Graph nature. Here we can substitute the zeta values. Okay. Zeta is equal to how much? Pi by 2. Zeta is equal to pi by 2, then tan pi by 2. Tan pi by 2 is nothing but sin pi by 2 upon cos pi by 2. Sin pi by 2, 1. Cos pi by 2, 0. 1 upon 0 is infinity. इसलिए graph going to the infinity. And this is equal to 0 at theta is equal to 0. Tan 0 is equal to 0. So graph will be this one. Next. Substitute. और सेकंड बात क्या करना कि दिस इज अ सर्कल में सर्कल ही है ना हमारा. यस सर नो. तो सर्कल के लिए नेचर कैसे आ जाएगा? सर्कल हैव द रेडियस इज डिफरेंट वन. ओके, तो ये पहला नेचर आएगा इज लाइक दैट. अरे समझ में. नेक्स्ट सर्कल कैसे आ सकता है? दिस इज लाइक दैट. नेक्स्ट सर्कल कैसे आ सकता है? दिस वन. नेक्स्ट सर्कल एंड सो. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट. और जितने बार वो क्रॉस करते हैं ना तो उसको बोलते हैं हम बाउंस स्टेट. ये जो ग्राफ है ना इस ग्राफ के लिए हाउ मेनी टाइम्स दिस सर्कल क्रॉस कर रहा है? तो वन टाइम्स कर रहा है. अरे समझ में. मतलब दिस टाइम्स मींस नंबर ऑफ बाउंस स्टेट इज वन. ओके, नंबर ऑफ बाउंस स्टेट इज वन. तो आप मुझे बोलिए कि व्हाट इज दिस वन? दिस इज नथिंग बट अ रेडियस ऑफ दिस सर्कल. यस सर, रेडियस ऑफ द सर्कल. तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट केस के लिए रेडियस कहां से कहां तक वेरी हो जाएगी. मान के चलिए कि फर्स्ट रीजन के लिए दिस वन इज अ रेडियस. मतलब 0 इज लेस देन r इज लेस देन पाई बाय 2. ओके, मतलब 0 टू पाई बाय 2 रीजन में हाउ मेनी टाइम्स दिस सर्कल इज क्रॉसिंग? वन टाइम इज क्रॉसिंग. यस और नो? मतलब नंबर ऑफ बाउंड स्टेट 0 is less than r is less than pi by 2. Okay, there is only one value. There is only one value. Okay, yes or no? There is only one value. How many times this is crossing? There is only one value. Yes or no? Only one value is crossing. मतलब how many bound states? How many bound states? Or how many times cutting this one? और अंदर लिख सकते हैं हम लाइन फर्स्ट. Okay. Cutting only one line. Cutting only one line. Cutting only one line. आ रहा है समझ में? Cutting only one line. So one bound state. So one bound state. समझ में आ रहा है? So one bound state. मतलब जितने टाइम्स क्रॉस करेगा इतने हम बाउंड स्टेट लिख सकते हैं. नेक्स्ट. हम इवन के लिए फाइंड आउट करके ऑड के लिए मतलब देयर इज वन ओनली वन मींस वी गेटिंग ओनली वन बाउंड स्टेट. मतलब दिस इज इवन बाउंड स्टेट. आ रहा है समझ में? वन इवन बाउंड स्टेट. वन इवन बाउंड स्टेट. वन इवन बाउंड स्टेट. वन इवन बाउंड स्टेट. अभी नेक्स्ट सेकंड रेडियस क्या हो जाएगी? देखिए मान के चलो कि सेकंड सर्कल के रेडियस कहां से कहां तक होती सकते? लाइक 5/2 is less than r is less than. Second one, pi by 2 is less than r is less than 3 pi by 2. Second circle के लिए radius is this one to this one means
pi/2 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 is less than capital R is less than pi. ओके, तो ड्रॉ करिए, यस दिस वन इज सर्कल, ये सर्कल के रेडियस कौन सा रहेगा, pi/2 टू pi/2. हाउ मेनी टाइम दिस इज क्रॉसिंग और कटिंग, वन टाइम्स. ओके, वन टाइम्स कटिंग, देन number of bound states, symmetric bound state is 1. Symmetric bound state is equal to how much, 1, because how many times this is cutting, 1. Yes or no, symmetric bound state is 1. नेक्स्ट रेडियस क्या ले सकते हैं हम नेक्स्ट सर्कल के लिए, पाई इज लेस देन आर इज लेस देन, यस pi/2 3 pi/2. सॉरी, सेकंड के लिए भी हमें ग्राफ निकलना पड़ेगा. 0 इज पाई इज लेस देन आर इज लेस देन हाउ मच, 3 pi/2. इससे पहले ग्राफ निकालिए, तो नहीं तो हमारी गलत स्टेट आ जाएगी. देखिए substitute the theta is equal to pi. Theta is equal to pi, then sin pi is equal to 0. And cos pi is equal to 1. 0 upon 1 is 0. So we can draw this point. Okay, next. Here is a 3 pi/2 now. Then sin 3 pi/2 is -1. And cos 3 pi/2, 0. Something upon 0 is infinity. मतलब here point getting at infinity. At point getting at infinity. मतलब graph is this one. अरे समझ में, ग्राफ इज दिस वन. नाउ नेक्स्ट वी कैन ड्रॉ दिस सर्कल. नेक्स्ट वाला सर्कल कौन सा हो जाएगा, देखिए दिस वन. लेकिन इस सर्कल के लिए रेडियस क्या रहेगी, दिस टू दिस, पाई इज लेस देन आर इज लेस देन 3 pi/2. नाउ पाई इज लेस देन आर इज लेस देन 3 pi/2. फॉर दिस केस हाउ मेनी टाइम दिस इज क्रॉसिंग, 2 times. Here is a 1 times, here is 1 times. Means pi to 3/2 region, how many times this is crossing, 2 times. Means here symmetric bound state is equal to how much, 2. आ रहा है समझ में. नेक्स्ट 3 pi/2 to 2 pi, 3 pi/2 to 2 pi. देखिए सब्स्टिट्यूट करिए, 2 pi, then sin 2 pi 0, cos 2 pi +1, 0 upon 1 0. नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 2 pi है ना, 2 pi plus 1 by 2 is 1/2, 2 into 2 4 5/2. Okay, next we can substitute the 5 pi/2. Sin 5 pi/2 is +1 or -1, whatever this one, divided by cos 5 pi/4. Cos 5 pi/4 is 0. Okay, something upon 0 is infinity. मतलब graph nature is this one. Graph nature is this one. Okay, now we can draw this circle. लेकिन इनके ओके, ये ग्राफ हो गया रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अभी सर्कल निकलना है मुझे, तो सर्कल निकल सकता हूँ. यस, बोलिए नेक्स्ट सर्कल कहां से कहां लेना पड़ेगा मुझे. नेक्स्ट सर्कल रेडियस इज दिस वन, तो हियर टू हियर. ओके, 3 pi/2 to 2 pi region, 3 pi/2 is less than or is less than 2 pi. Okay, for this region, this is the curve of the circle. This is the curve of circle. How many times this is crossing? How many this one is crossing? See here, first, second, 2 times is crossing. अरे समझ में, मतलब number of bound state, symmetric bound state is equal to how much, 2. अरे नहीं तो ऐसी बात है, ये थोड़ी है कि यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ 3 आना है. Yes or no? How many times cutting? This one is this number is bound state. Clear? Next, draw the next circle. 2 pi to 5 pi/2. 2 pi is less than, 2 pi is less than, r is less than 5 pi/2. समझ में आ रहा है. तो इस रीजन में this circle is cutting to this line. How many times? This one is the first. ये तो infinity तक जा रहा है, तो first, here this is the second, this is the third. Means we getting how many bound states? 3 bound states. आ रहा है समझ में, मतलब symmetric bound state is equal to how much, 3. Symmetric bound state is equal to 3. Yes. In this case any doubt? आप वैसे ही चले जा सकते हैं आगे आगे आगे.
ओके, दिस इज फॉर सिमेट्रिक केस। क्यों सिमेट्रिक केस? क्योंकि हमने स्टार्टिंग केस से कौन सा फंक्शन लिया था, देखिए स्टार्ट कहां से कर दिया था, स्पेशली मेंशन किया था फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ओके, मतलब दिस इज द बाउंड स्टेट फॉर सिमेट्रिक केस, क्लियर, फॉर सिमेट्रिक बाउंड स्टेट, फॉर सिमेट्रिक बाउंड स्टेट। जितने टाइम्स वो क्रॉस करेगा इतने टाइम्स हम बोलेंगे दिस इज द नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स। देखिए मैंने क्या कर दिया, हमारे पास ये इक्वेशन आया था, यस, विच इक्वेशन, eta is equal to zeta tan zeta, ओके, मतलब zeta is nothing but here angle, ओके, नाउ एंगल इस डायरेक्शन से लीजिए एक्स एक्सिस से, और eta इस डायरेक्शन से लीजिए, eta is nothing but, अब इसको eta लिखिए या zeta tan zeta लिखिए, दिस डायरेक्शंस, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो मैंने थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, पाई बाई टू, ओके, मतलब tan पाई बाई टू, tan पाई बाई टू, फर्स्ट तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, tan जीरो, tan जीरो इज नथिंग बट जीरो वैल्यू, तो जीरो कहां से होगा, यहां होगा, अरे समझ में। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू कौन सी रहेगी, पाई बाई टू रहेगी, तो पाई बाई टू सब्स्टिट्यूट करिए tan में, तो साइन पाई बाई टू अपॉन कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू कितना होता है, जीरो, समथिंग अपॉन जीरो इज इंफिनिटी, तो ये ग्राफ कहां तक चला जाएगा, जीरो टू इंफिनिटी। tan का तो ग्राफ पता होता है ना हमको, दिस इज लाइक दैट, ऐसा ग्राफ होता है ना, सॉरी, ग्राफ कैसे होता है, दिस इज लाइक दैट, yes or no, here going to the infinity, here also going to the infinity, and this graph is continuous, discontinuous, this one is not well behaved, clear, बस हमें इस पे फोकस करिए, 0 is less than r is less than pi by 2, this is the radius circle, तो 0 is less than r is less than pi by 2, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि we getting how many number of bound states, मतलब कितने टाइम्स वो इस लाइन को कट कर सकता है, ये सर्कल की लाइन, तो मैंने पुट कर दिया 0 और पाई बाई टू, ग्राफ कैसे आ रहा है, वो दिस वन, हमने पहले रेडियस ले ली, 0 इज लेस देन, where 0 is less than r is less than pi by 2, how many times this is crossing, one time, then we getting how many number of bound states, one bound states, clear, r by 0 is less than, r is less than pi by 2, symmetric bound state, symmetric bound state is equal to how much, 1। next put करिए, theta is equal to pi by 2 values, theta is equal to pi by 2, pi value, sin pi 0, 0 upon minus 1 means this is equal to how much, 0, 0 upon something is 0, next 3 pi by 2, sin 3 pi by 2 minus 1, cos 3 pi by 2 0, minus 1 upon 0 is infinity, or something upon 0 is equal to infinity, graph nature is this one, okay। लेकिन जब हम रेडियस ले रहे पाई बाई टू टू पाई, पाई बाई टू टू पाई, ये जो कर्व है ना सर्कल वाला, ये कितने टाइम्स क्रॉस कर रहा है, एक ही टाइम क्रॉस कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ये कहां से किन के बीच में लेना है, पाई बाई टू टू पाई लेना है, ओके, इन दिस रीजन हाउ मेनी टाइम्स दिस वन इज क्रॉस, only one times, means number of symmetric bound state is 1, clear। next similarly we can substitute the 3 pi by 2, 3 pi by 2, graph going to the infinity, now again draw this line in which region, pi to 3 pi by 2, pi to 3 pi by 2, now this line cutting how many times, 1 2 times, means we're getting how many bound state, 2 bound state, in which region, pi is less than 3, r is less than 3 pi by 2, okay। next we can substitute 3 pi by 2 already put kar diya, next we can substitute the 2 pi, sin 2 pi 0, cos 0, cos 2 pi plus 1, 0 upon something 0, so we're getting 0, next we can substitute the 5 pi by 2, then sin 5 pi by 2 we're getting some value divided by cos 5 pi by 4, cos 5 pi by 2 is equal to how much, cos pi by 2 is 0, something upon 0 is infinity, like that, similarly 3 pi and so on, 3 pi के लिए नेचर ऐसे आ जाएगा, फॉर सिमेट्रिक केस, फॉर असिमेट्रिक केस, फॉर सिमेट्रिक केस, हाँ बोलिए, सिमेट्रिक बाउंड स्टेट, सिमेट्रिक बाउंड स्टेट, सिमेट्रिक बाउंड स्टेट,
0 is less than r is less than pi by 2. Number of bound state 1. Next, 0 is less than, pi by 2 is less than r is less than pi. Symmetric bound state 1. Next, pi is less than r is less than 3 pi by 2. Number of bound state 2. Next, 3 pi by 2 is less than r is less than 2 pi. Number of bound state is how much? 2 and so on. बस वो रीजन दे देंगे कि इन दिस रीजन हर बार तो वही नहीं रहेगा. Pi by 2 or how many number of bound state we getting in which region pi is less than r is less than 3 pi by 2. यस, इसमें बोलिए कौन सा डाउट आ रहा है आपको, समझ में नहीं आया? थोड़ा सा लेंथी है, बाकी क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक दो बार वो लिख लिया ना आपने तो अच्छी तरफ से समझ में आ जाएगा. सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है? हाउ टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज? ओके, n square plus zeta square is nothing but like a r square, इसलिए we can draw this circle, इसलिए हम सर्कल निकाल रहे हैं इसको. What is the radius here? Radius is nothing but m v naught a square upon 2h cross square. अभी हमें कौन से सिस्टम के लिए फाइंड आउट करना है? अभी हमको फाइंड आउट करना है ऑड केस. देखिए, फॉर ऑड केस, सेकंड ऑड केस, ऑड केस, ऑड केस, ऑड केस फॉर सिमेट्री, for odd case for symmetry, for symmetry. Okay. Again we can use the boundary conditions. Yes, we can use the boundary conditions. देखिए, this is a boundary one. Here function is psi first, here function is psi second, but what is the psi second here? Psi second is c odd के लिए sin kx. अरे समझ में? These are continuous boundary conditions. Yes, boundary condition. What is the boundary condition? पहली boundary condition क्या होती है? At x is equal to minus a by 2, psi 1 is equal to psi first at x is equal to minus a by 2 is equal to psi second at x is equal to minus a by 2 are continuous one. अरे समझ में? इसका मतलब क्या है? These are continuous to each other. Okay, now substitute करिए. At minus a by 2 means what is the value of psi 1? Psi 1 is equal to a e to the power minus gamma x. At what value of x? X is equal to minus a by 2 is equal to what is the psi second? अभी sin ले रहे, cos ले रहे, तो sin ले रहे, c sin kx at x is equal to minus a by 2 means these two function are continuous at a by 2. Put करिए, x is replaced by minus a by 2, then this become a e to the power gamma a by 2 is equal to sin minus theta is minus sin theta, मतलब minus yes c के into नहीं k नहीं बाहर निकाल सकते, c sin k a by 2, sin k by 2. इक्वेशन नंबर 1 बोलिए इसको. नेक्स्ट, at x is equal to minus a by 2, second boundary condition at x is equal to minus a by 2 मतलब dava psi first upon dava x at x is equal to minus a by 2 is continuous dava psi second upon dava x at x is equal to how much? Minus a by 2. समझ में आ रहा है? मतलब wave function is continuous as well as first derivative also continuous at a boundary. Clear? Now we can take the derivative of this function a e to the power gamma x, मतलब a capital A, sorry a is not there, it's gamma na, gamma e to the power minus gamma x is equal to, बोलिए, a e to the power minus gamma x derivative is minus a gamma e to the power minus gamma x, हाँ, is equal to yes, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा, माइनस c k cos
k x ck x at which boundary? At x is equal to minus a by 2. At which boundary? x is equal to minus a by 2. ऐसी कुछ बात नहीं, आप प्लस भी ले सकते हैं, वी गेटिंग द सेम रिजल्ट. आपको एज यू विश, आपको फर्स्ट बाउंड्री चूज करना है तो फर्स्ट चूज करिए, सेकंड बाउंड्री चूज करना है तो सेकंड बाउंड्री, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू यू बाई टू. लेकिन यहाँ सेकंड बाउंड्री मतलब सेकंड कंडीशन ले रहे हैं, आ रहे समझ में? हाँ, बाउंड्री इज सेम बट सेकंड कंडीशंस पुट करिए. देन दिस इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस ए गामा e टू द पावर माइनस a is replaced by minus a, तो माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? गामा a by 2 is equal to how much? ck cos x is replaced by minus a by 2, but this is a cos, then we're getting the plus. Then we can say equation number 2. Equation number 2. What is the equation number 1? Again same, equation 1 divided by 2. Equation 1 divided by 2. Equation 1 divided by 2. Divided by 2. Then which part get cancelled? 1. A e to the power gamma a by 2 divided by minus a gamma, sorry, 2 divided by 1 करिए, 2 divided by 1. ओके यस चलेगा, 2 डिवाइडेड बाय 1. 2 डिवाइडेड बाय 1, तभी तो हमारे गामा की वैल्यू आनी चाहिए ना, नॉट. हाँ, तो ए गामा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ए गामा ई टू द पावर गामा ए बाई 2 डिवाइडेड बाय ए ई टू द पावर गामा ए बाई 2, समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू हाउ मच? सी के cos k by 2 divided by c sin k by 2. Which part get cancelled? A e to the power gamma, a e to the power gamma get cancelled. C get cancelled. Okay. Cos upon sin. यह बचेगा ओनली गामा. ओके. और क्या cos upon sin is nothing but cot, मतलब k cot k a by 2. Okay. Miss we getting for odd case. Gamma is equal to k cot k by 2. ओके, ये लाइक अ डिफरेंट थोड़ा सा फॉर्म के लग रहा है, तो उसको अच्छी तरफ से लिखिए, तभी हमें इसको भी सेम वैल्यू लिख सकते हैं. आप बोलेंगे k इज इक्वल टू, मैंने k लिख दिया तो यहाँ डिफिकल्ट हो जाएगा लिखना, ऐसा ना. इसीलिए वी कैन राइट डाउन हियर मल्टीप्लाई बाय a by 2. हियर आल्सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय a by 2 इनटू cot k a by 2. cot ka by 2. बट ऑलरेडी हमने देखा है कि ईटा इज नथिंग बट गामा a by 2 एंड जीटा इज नथिंग बट ka by 2. सब्स्टिट्यूट करिए, मीन्स ईटा इज इक्वल टू हाउ मच? ईटा इज इक्वल टू yes, eta is equal to see here is a plus not minus, so here we getting the minus, so minus k, then this is equal to how much? Minus, here also we can write down the minus, and eta is equal to gamma e upon this one, matlab this is equal to minus zeta cot zeta. Okay, same graph nature. देखिए फर्स्ट वन 0, next 5 by 2, next 5, next 3 pi by 2, next 2 pi, next 5 pi by 2 and so on. हमको रिलेशन क्या मिल रहा है? तो राइट डाउन हियर जीटा tan zeta. Okay, and here we can write down, sorry, here we can write down the n, और कोई दिक्कत नहीं, n और
माइनस जीटा टाइम जीटा लिख सकते हैं, कोई बात नहीं. And this is equal to how much? Here in along the direction we can write zeta. Okay, zeta is write down along x directions. Clear? Substitute करिए same. Substitute करिए same. Yes. क्या करना है, बस हमें थीटा की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करना है. मैंने थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया. कॉट आपको समझ में आ रहा है क्या? कॉट जीटा इज नथिंग बट कॉस जीटा अपॉन कॉस जीटा अपॉन साइन जीटा. समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ 0 लिख दे दूं तो cos 0 अपॉन साइन 0 हो जाएगा. तो cos 0 इज इक्वल टू हाउ मच? 1 अपॉन 0 इज लाइक दैट इंफिनिटी. आ रहा है समझ में? तो यह इंफिनिटी इस एक्सिस पे चला जाएगा. नेक्स्ट वी कैन सब्स्टिट्यूट द पाई बाय 2. देन cos पाई बाय 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 0. sin पाई बाय 2 इज 1. मतलब 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पॉइंट जो है हमारा कहां से होगा? यहाँ होगा. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ये थोड़ा अच्छी तरफ से ध्यान दीजिए, नहीं समझ आ गया तो पूछिए मुझे. नेक्स्ट मुझे एंगल कौन सा लेना है? तो पाई लेना है. ओके, तो पाई में यहां पुट कर देता हूं. तो cos पाई इज इक्वल टू -1, sin पाई इज इक्वल टू 0. -1 अपॉन 0 इज नथिंग बट माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी सिंपली. आ रहा है समझ में? तो नेचर कैसे होगा? दिस इज द इंक्रीजिंग. यहां से इंक्रीज होगा एट पाई बाय 2 के लिए वो इंफिनिटी तक चला जाएगा. ओके, नेक्स्ट वैल्यू पुट करिए. विच वन इज द नेक्स्ट? 3 पाई बाय 2. cos 3 पाई बाय 2 0. 0 upon something 0. तो पॉइंट इज हियर. नेक्स्ट 2 पाई पुट करिए. cos 2 पाई प्लस 1 sin 2 पाई 0. समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी. तो ग्राफ कैसे हो जाएगा? यहां से इंक्रीज होते होते गोइंग टू द इंफिनिटी एट 2 पाई. अरे समझ में? सिमिलरली 5 पाई बाय 2. cos 5 बाय 2 इज 0. मतलब नेचर इज लाइक दैट. इसके थोड़ा सा 4 5 5 बाय 2 हम थोड़ा सा आगे ले लेते, हम और एक लाइन बना सकते हैं. और नेक्स्ट जो 3 पाई रहेगा ना उसमें फिर इंफिनिटी तक चला जाएगा. क्लियर? तो सेम ड्रॉ द सर्कल. पहले सर्कल के लिए रेडियस क्या रहेगी? 0 टू पाई बाय 2. लिखिए 1 बाय 1. 0 इज लेस देन r इज लेस देन पाई बाय 2. ओके, ड्रॉ दिस सर्कल. सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया. तो हाउ मेनी क्रॉसिंग दिस लाइन? ये जो लाइंस दिख रहे हैं ना, इस लाइन के लिए कितने टाइम्स में वो क्रॉस कर रहा है? तो कोई भी नहीं, बिकॉज यहाँ लाइन है ही नहीं है. अरे समझ में? बिकॉज वी कैन सब्स्टिट्यूट द 0 एंड पाई बाय 2 वैल्यू. इस टाइम हमारे पास कोई भी फंक्शन नहीं आ रहा है, नेचर नहीं आ रहा है. तो 0 इज लेस देन r इज लेस देन पाई बाय 2. दिस इज असिमेट्रिक बाउंड स्टेट. असिमेट्रिक बाउंड स्टेट, बिकॉज हम असिमेट्रिक ही देख रहे हैं ना यहाँ. बाउंड स्टेट इज इक्वल टू हाउ मच? 0. इन विच रीजन? 0 टू पाई बाय 2. 0 टू पाई बाय 2 में ये सर्कल किसी भी लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है. क्लियर? नेक्स्ट पाई बाय 2 टू 5. पाई बाय 2 इज लेस देन r इज लेस देन 5. तो ड्रॉ करिए. हाउ मेनी टाइम्स दिस इज क्रॉसिंग? 1 times. Yes or no? Means we're getting how many bound states? 1 bound state. Asymmetric bound state is equal to how much? 1. In which region? Pi by 2 is less than r is less than pi. Next draw करिए. Next बोलिए. Where to where? Pi to 3 pi by 2. मतलब phi is less than r is less than 3 pi by 2. How many times this is crossing? Only 1 times. ओनली 1 टाइम्स. यहाँ कहीं क्रॉस देखा? ये दिस वन इज नॉट लाइन ना, डॉटेड लाइन देखा कि हमको बस इंफिनिटी जाना है, बाकी कुछ नहीं. इससे आगे मत जाइए, इसीलिए हमने ये डॉटेड लाइन निकाल दी. क्लियर? तो व्हाट इज द सिमेट्रिक बाउंड स्टेट? अगेन वी गेटिंग 1. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ड्रॉ द नेक्स्ट लाइन. रेडियस 3 पाई बाय 2 is less than r is less than 2 pi. 3 pi by 2 is less than r is less than 2 pi. Okay, for this case we getting how many bound states? How many times this is crossing? This is the first, this will be second. अरे समझ में? तो here asymmetric bound state is equal to asymmetric bound state कितने टाइम्स वो क्रॉस कर रहा है? 2 टाइम्स. तो asymmetric bound state is equal to 2. नेक्स्ट ड्रॉ करिए नेक्स्ट सर्कल.
कहां से, कौन से रीजन में, 2 पाई टू 5 पाई बाई 2, 2 पाई इज लेस देन r इज लेस देन 5 पाई बाई, हाउ मेनी टाइम्स क्रॉस कर रहा है, तो देखिए this is the first one, next 2, this one is not a line, huh? Means what is the asymmetric bound state, asymmetric bound state is equal to how much, 2. नेक्स्ट ड्रॉ करिए, देखिए यहां से इसको बस इंटरसेक्ट मत करिए, हाउ मेनी टाइम्स दिस इज क्रॉसिंग, बोलिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके, मींस व्हाट इज द asymmetric bound state, 5 पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2, is of 5 पाई बाई 2 is less than r is less than 3 pi, asymmetric bound state is equal to 3. यस, अब मुझे बोलिए इसमें कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये तो हमने प्रूव कर दिया, हाउ टू गेटिंग दिस इक्वेशंस, ये इक्वेशन कैसे आ रहा है असिमेट्रिक के लिए, ये देखा हमने, लेकिन ये ग्राफ ड्रॉ करते समय आपको कौन सी बात समझ में नहीं आ रही कि सर ये कैसे आ रहा है, ये तो हमने कैसे डिसाइड कर दिया कि वो सर्कल आएगा, बिकॉज हमारे पास इक्वेशन आ रहा है ईटा स्क्वायर प्लस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू यस m v नॉट ए स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर, ओके, दिस इज नथिंग बट हम इसको रेडियस कंसीडर कर सकते हैं, यस और नो, लाइक दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज नथिंग बट r स्क्वायर, इसलिए हमने डिसाइड कर दिया कि हमें इसको सर्कल में कन्वर्ट करना है, बस, और बाकी ये ड्रॉ करने में क्या दिक्कत आ जाएगी, बोलिए मुझे, इसमें कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, यस बोलिए, कोई डाउट्स, ड्रॉ कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट, अब दोनों को हम एक साथ निकालेंगे, दोनों को भी एक साथ निकालेंगे, देखिए कैसे, here we can take the zeta or zeta tan zeta, okay, taking along y directions, zeta cot zeta along y directions, and here we can taking the zeta values, okay, zeta values, देखिए angle 0, next pi by 2, next pi, next 3 pi by 2, next 2 pi, next 5 pi by 2, नेक्स्ट 3 पाई, अरे समझ में, तो ड्रॉ करिए, पहले इक्वेशन ले लेते हैं हम, विच वन, फर्स्ट इक्वेशंस, और 10 जीटा, ओके, पहला जो है तो सिमेट्रिक के लिए ले रहे हैं हम 10 जीटा, ओके, तो ड्रॉ करिए, 10 0 0, 10 पाई बाई 2 इंफिनिटी, ओके, नेक्स्ट देखिए 10 by 2, this is for symmetric case, nature is this one,
Okay. Next, pi by 2 infinity. Next, pi is equal to sine pi 0, cos 0, cos pi minus 1. So nature will be start this one. And what is the sine 3 pi by 2 is 1. And cos 3 pi by 2, 0. So infinity ho jayega. So nature is this one. Next, similarly, okay, मैं कलर को लिखता हूँ, हाँ, this color for symmetric one, symmetric, ओके, और सेकंड कलर ले लेते फॉर असिमेट्रिक के लिए। असिमेट्रिक के लिए कौन सा कलर चूज करेंगे? मान के चलिए हम ये कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है, फॉर असिमेट्रिक। असिमेट्रिक इज कॉट, ओके, कॉट 0 इंफिनिटी, कॉट पाई बाई 2 0, ओके, तो इसमें वो नहीं आएगा। नेक्स्ट, कॉस पाई इंफिनिटी, cot pi infinity, cot pi is equal to cos pi upon sin pi, cos pi 0 minus 1, sin pi 0, minus 1 upon 0 is infinity। तो नेचर कैसे आएगा? नेचर इज दिस वन, ओके। सिमिलरली ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर दिया, लेकिन आपको लगता है कैलकुलेशन करना है तो करिए। तो cot इज नथिंग बट cot मीन्स cos अपॉन sin, cot 3 pi by 2 0, sin 3 pi by 2 minus 1, cot 2 pi, cot 2 pi means cos 2 pi upon sin 2 pi, cos 2 pi plus 1, sin 2 pi 0, something upon 0 going to the infinity, okay। Next, similarly, this one, this color indicate that asymmetric, okay। Same, draw the circle, yes, circle draw करिए। In which region 0 is less than r is less than 0, 0 is less than r is less than 0 is less than r is less than pi by 2, okay, 0 is less than r is less than pi by 2। तो इसके लिए सर्कल निकालिए, दिस वन सर्कल। हाउ मेनी टाइम्स दिस इज क्रॉसिंग? देखिए ये जो पार्ट है कितने टाइम्स में क्रॉस कर रहा है? तो ओनली वन टाइम्स, मीन्स वी गेटिंग हाउ मेनी बाउंड स्टेट्स? बाउंड स्टेट इज इक्वल टू सिंपली वन, ओके। लेकिन इसको दो पार्ट्स में हमें स्प्लिट करना जरूरी है। विच टू पार्ट्स? asymmetric and symmetric, bound state is equal to 1, then symmetric bound state, ये सिमेट्रिक का कलर है असिमेट्रिक का, येलो वाला सिमेट्रिक है, ऐसा ना, तो सिमेट्रिक बाउंड स्टेट इज 1, ओके। नेक्स्ट, सेकंड, पाई बाई 2 इज लेस देन, पाई बाई 2 इज लेस देन r इज लेस देन पाई, ओके। इसके लिए ड्रॉ करिए, यस। How many times this is crossing? 2 times, yes or no? Here as well as here, okay। टोटल बाउंड स्टेट बोलिए मुझे कितने आ रहे? टोटल बाउंड स्टेट इज 2, yes or no? टोटल बाउंड स्टेट इस यहां क्रॉस कर दिए, यहां क्रॉस कर दिए, मतलब टोटल बाउंड स्टेट इज इक्वल टू 2, बट आउट ऑफ 2 one is symmetric, one is asymmetric, this is for symmetric, this is for asymmetric। आ रहा है समझ में? मतलब symmetric bound state is equal to 1, asymmetric bound state is equal to 1, clear? आ रहा है समझ में? This is line for symmetric, this is line for asymmetric, clear? Next, how many times this is crossing? 3 times. This one, symmetric, symmetric. This one, symmetric, symmetric. This one, symmetric, asymmetric. But for this circle, we're getting how many bound state? 3 bound state. First bound state, second bound state, and third bound state. Means total bound state. In which region? Pi is less than r is less than 3 pi by 2. Is less than 3 pi by 2. Our total bound state is equal to how much? Total bound state is equal to 3. Total bound state is 3. Out of 3 bound state, we're getting how many bound state for symmetric one? Symmetric bound state is equal to 2.
एंड असिमेट्रिक बाउंड स्टेट इज इक्वल टू 1। आ रहा है समझ में? टोटल 3 आ रहे हैं बाउंड स्टेट, 1 2 3, लेकिन इसमें सिमेट्रिक और असिमेट्रिक भी फाइंड आउट करना जरूरी है। तो व्हाट इज द असिमेट्रिक बाउंड स्टेट? 2। व्हाट इज द असिमेट्रिक बाउंड स्टेट? 1। ओके, नेक्स्ट लीजिए रेडियस। नेक्स्ट रेडियस इज 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, 3 pi by 2 to 2 pi. How many times cross? देखिए, फर्स्ट, नेक्स्ट, सेकंड, ओके, थर्ड, fourth, third, fourth. Here we're getting how many bound state? 1 2 3 4. Total bound state. Total bound state is equal to 4. For which region? 3 pi by 2 is less than or is less than 2 pi. Okay. Total bound state is equal to how much? Total bound state is equal to 4. Total bound state is equal to 4. 1 2 3 4. Out of 4, symmetric bound state is 2. Asymmetric bound state is equal to how much? 2. समझ में आ रहा है? 2 asymmetric, 2 symmetric. Similarly, next 2 pi to 3 by 2. बोले symmetric 1 2 3. Next asymmetric 1 2. Okay, means 2 pi to 5 pi by 2. 2 pi is less than r is less than 5 by 2. ये सर्कल के लिए कितने टाइम्स क्रॉस कर रहे हैं हमारा सिस्टम? सर्कल 5 टाइम्स। यस और नो? तो बाउंड स्टेट कितने हो गए? 5। बाउंड स्टेट 5। इसमें सिमेट्रिक कितने देखिए? सिमेट्रिक बाउंड स्टेट इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। येलो कलर सिमेट्रिक बाउंड स्टेट 3 and asymmetric bound state is 2. Asymmetric bound state is 2. Next 5 by 2, 5 by 2 is less than r is less than 3 pi. Okay, draw करिए। Symmetric, symmetric, symmetric. How many bound state? 3 bound state is symmetric. What is asymmetric? 1 2 and 3. Means total bound state for this region is 6. Bound state 6 आ रहा है। Okay, total number of bound state is equal to 6. Bound state 6 है, उसमें symmetric bound state 3, asymmetric bound state 3. आ रहा है समझ में? Next for this case, yes, symmetric 1, symmetric 2, next symmetric 3, symmetric 4, asymmetric 1 2 3. Means for which region? For where to where? 3 by 2, 5 by 2, 7 5 by 2. Okay, 3 pi is less than r is less than like 7 pi by 2. For this region total bound state कितने आ रहे हैं हमारे? 7 आ रहे हैं। इसमें सिमेट्रिक बाउंड स्टेट 4 और सिमेट्रिक बाउंड स्टेट 3। तो आप देखिए इसमें कुछ रिलेशंस आ रहा है। कौन सा रिलेशन आ रहा है देखिए? Here we getting only one bound state, only one bound state. किसको जा रहा है? सिमेट्रिक को जा रहा है, असिमेट्रिक को जा रहा है? तो सिमेट्रिक को जा रहा है। अरे समझ में? सिमेट्रिक 1। नेक्स्ट पाई बाई 2 टू पाई में कितने बाउंड स्टेट मिल रहे हैं हमारे पास? 2 बाउंड स्टेट मिल रहे हैं। ये समझना। लेकिन जो 2 बाउंड स्टेट आ रहे हैं ना, तो उसमें वन बाउंड स्टेट गोइंग टू द सिमेट्रिक वन एंड वन बाउंड स्टेट गोइंग टू द असिमेट्रिक, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये समझना। सिमेट्रिक के लिए 1, असिमेट्रिक के लिए 1।
क्लियर? सिमेट्रिक बाउंड स्टेट इज 1, असमेट्रिक बाउंड स्टेट इज 1. नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट ले रहे पाई टू 3 पाई बाई 2, वी गेटिंग द 3 बाउंड स्टेट. यस और नो? लेकिन जब हमारे पास 3 आ रहा है ना, तब यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है. यस और नो? मतलब यहाँ एक ज्यादा हो रहा है, यहाँ एक लाइक कम हो रहा है. मतलब here is a 2, here is 1. लेकिन जब हम 3 पाई बाई 2 to 2 पाई जा रहे हैं, तो वी गेटिंग हाउ मेनी बाउंड स्टेट? 4 बाउंड स्टेट. एट दैट टाइम वी गेटिंग 2 सिमेट्रिक बाउंड स्टेट, 2 असमेट्रिक बाउंड स्टेट. मतलब दोनों के लिए भी इक्वल आ रहा है. समझ में आ रहा है? इन विच रीजन? 3 पाई बाई 2 to 2 पाई. मतलब हियर हमारे पास 4 बाउंड स्टेट थे, 2 2 हो गए. नेक्स्ट, हमें हमारे पास कितने बाउंड स्टेट है? 5 बाउंड स्टेट है. तो सिमेट्रिक के लिए जा रहे 3, असिमेट्रिक के लिए जा रहे 2. नेक्स्ट हमारे पास 6 बाउंड स्टेट आ रहे हैं, तो सिमेट्रिक 3, असिमेट्रिक 3. मतलब इक्वल हो रहे हैं. जब हमारे पास इवन नंबर है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बाउंड स्टेट के लिए. जब हमारे पास ऑड नंबर है तो एक जो वैल्यू है, दिस इज ग्रेटर इन सिमेट्रिक वन, दिस इज ग्रेटर इन सिमेट्रिक वन. आ रहा है समझ में? तो सिंपल बोल सकते हैं, तो सिमेट्रिक बाउंड स्टेट एंड असिमेट्रिक बाउंड स्टेट, even number of bound state, even number of bound state, even number of bound state, even number of bound state को तो even number of bound state तो equally distribute even number of bound state. सपोज मान के चलो कि n बाउंड स्टेट है, तो सिमेट्रिक बाउंड स्टेट n बाई 2 और सिमेट्रिक बाउंड स्टेट n बाई 2. समझ में आ रहा है? मतलब दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. odd number of bound state, odd number of bound state, yes, odd number of bound state, then here symmetric bound state is equal to n by 2 plus 1, and asymmetric bound state is equal to n by 2 minus 1, n by 2 minus 1. देखिए सपोज मान के चलो कि n is equal to 1, n is equal to 1, नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते. ऐसा लिखेंगे तो चलेंगे. n प्लस 1, ओके, n बाई 2, तो नंबर ऑफ बाउंड स्टेट इज 1, तो 1 बाई 2 हो जाएगी. यस, तो ऐसे नहीं लिख सकते हम इसको. थोड़ा अलग फॉर्मूला हमें बनाना पड़ेगा इसको. डोंट राइट डाउन लाइक दैट. इज इक्वल, और इसमें थोड़ा सा 1 लेंगे तो 1 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 हो जाएगी. फ्रैक्शन में तो नॉट पॉसिबल, सो डोंट राइट डाउन लाइक दैट. बट लेकिन इवन हो तो हाफ हाफ लिख सकते हैं हम. इवन हाफ हाफ, ठीक है. उसके लिए मैं अलग फॉर्मूला बता देता हूं आपको. बस याद रखिए कि सिमेट्री केस इक्वल नंबर, मतलब जो भी आएगी वो इक्वल दीजिए दोनों के लिए. और जब हमारे पास डिफरेंट हो, मतलब ऑड हो, यस. Yes, any doubt in this case? No. Symmetric, asymmetric relations, T is equal to this. Okay, इस टॉपिक में कुछ डाउट है अभी? ओके.